Good morning, Riddhi. Good morning, Astha. Good morning, Shatakshi. Good morning, Aditi. Good morning, Chanda. All good? Good morning, Aksa. Did you all see Bronte Sisters Wali class? Just 1 minute. Yes, completed? Okay, good. Sunday morning. Be ready for our oral test, okay? I don't want any excuses, please. Now there should not be any kind of excuses. Now it is high time. 2 months. I want everybody prioritizing this thing. ठीक है ना? Good morning, Rajat. So let's move on today with our Victorian age, a very important age, okay, Victorian age. Let me share my slide. Yeah. So फ्रांसिस ट्रोलोप रोज क्रोनोलॉजी का रिवीजन किया करो. मैं एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी, एक वो देखी सबने? क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, ट्रस्ट में. एक मैंने रोमांटिक एज पे बनाई थी, एक मैंने अभी अर्ली विक्टोरियन एज पे बनाई है. 2 मिनट लगते हैं. आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी. फ्रांसिस ट्रूलोप, एडवर्ड बल्वर लाइटन, डिसराइली एन्सवर्थ, चार्ल्स लिवर, एलिजाबेथ गैस्किल, फिर हमारे मेजर ठाकरे, चार्ल्स डिकिंस. सबसे पहले जो मेजर राइटर्स हैं उसमें सबसे पहले हैं ठाकरे, देन डिकिंस, एंटनी ट्रूलोप, देन ब्रॉन्टे सिस्टर्स, बीच में जॉर्ज एलियट एंड देन एन ब्रॉन्टे. तो यहाँ तक हमने किया है. जॉर्ज एलियट नहीं की थी. विल डू जॉर्ज एलियट टुडे. ठीक है. George Eliot. Let's look at George Eliot first. Either works nahi. This is George Eliot. This picture actually looks like as if a boy is wearing a wig, isn't it? नाम भी जॉर्ज है. Okay. Let's begin. So जॉर्ज एलियट का रियल नाम था मैरी एन इवांस. ये सारे देखो फीमेल राइटर्स, हमने ब्रॉन्टे सिस्टर्स की बात की थी, उनके भी पेन नेम्स थे. जॉर्ज एलियट का भी पेन नेम था. प्रॉबेबली शी वांटेड टू हाइड हर फीमेल आइडेंटिटी and so that publication easy ho jaye. Publication for a woman was not easy, so she also took up this name, George Eliot. She was a Victorian novelist, a philosopher,
and a translator as well. November 22nd, 1819, she was born in Mary Ann Evans, Warwickshire in England. ठीक है, Warwickshire, England. Her family belonged to the lower gentry. 1824 से 35 के बीच में ऑफ कोर्स एजुकेशन लिया इन्होंने, बहुत सारे डिफरेंट बोर्डिंग स्कूल्स में ये गई. फिर 1836 में क्या हुआ कि ये तो अटेंड्स बोर्डिंग स्कूल एंड डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रिलीजन, लिटरेचर एंड जर्मन फिलॉसफी. After her mother's death, she returns home to care for her father. And there she continues her self education, reading widely in literature, philosophy, theology, ये सब अपने आप ये पढ़ने लग गई. ठीक है. So 1841 she moves with her father to Coventry, and there she meets Charles and Cara Bray. ये लोग कौन थे? ये लोग कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने एलियट को इंट्रोड्यूस किया प्रोग्रेसिव और फ्री थिंकिंग आइडियाज़ के साथ. ये इंस्पायर हुई उनके आइडियाज़ को देख के. तो प्रोग्रेसिव जो इनके आइडियाज़ आए फ्री थिंकिंग वाले, वो यहाँ से आए, चार्ल्स एंड कैरा ब्रे. ठीक है. So she begins questioning traditional Christian beliefs. 1846, she translates, please mark, David Strauss's controversial Life of Jesus. The name of this work was The Life of Jesus by David Frederick Strauss. This she translated into English and she published it anonymously. German work था ये, German higher criticism का. And here begins her career in translation and in intellectual writing. तो अब क्या होता है 1849 में her father also dies. Okay, and she travels to the continent with वही लोग जो ब्रेज थे, चार्ल्स और कैरा ब्रे, फ्री थिंकिंग वाले, उनके साथ ही ट्रैवल करती हैं, स्पेंडिंग टाइम इन जिनीवा एंड देन, दिख रहा है ना सबको? हाँ, स्पेंडिंग टाइम इन जिनीवा एंड what was I saying? And yeah, she broadened her intellectual circle also, और लोगों से मिली. तो 51 में she moves to London, becomes assistant editor of, please mark, the Westminster Review. प्लीज याद रखना और याद मुझे भी करवा देना कि हमने अभी तक एक चीज जो नहीं की है, पीरियोडिकल्स. सिर्फ एक क्लास मैंने यूट्यूब पे डाली थी पीरियोडिकल्स की. आई डोंट नो आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी या नहीं देखी. गुड मॉर्निंग याश, कोई बात नहीं. डिड यू ऑल सी इट या भूल गए हो देखना? जिसने नहीं देखी है, भूल गए हैं, मैं कह रही हूँ जैसे जैसे क्लासेस आती हैं वैसे देख लिया करो, अदरवाइज पाइल अप हो जाएगा. तो वो एक ही आई थी अभी तक, उसके बाद हमने आगे के नहीं किए हैं. हाँ ठीक है, तो वो करने हैं. पीरियोडिकल से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी आ जाता है. हाँ फिर से देख लेना, मुझे याद कराना, किसी एक टेस्ट में मैं डालूंगी उसको. ठीक है. तो नाउ शी मूव्स टू लंडन एंड शी बिकम्स एन एडिटर ऑफ वेस्टमिंस्टर रिव्यू, जॉन चैपमैन के अंडर. यहाँ पे भी बहुत सारी इंटेलेक्चुअल्स से ये मिलती हैं. 1854 sorry, she begins a partnership, एक long term partnership इनकी शुरू होती है with this person called जॉर्ज हेनरी लुइस. यहीं से नाम तो नहीं ले लिया इन्होंने? ये एक मैरिड आदमी था, तो इसलिए सोशल स्कैंडल हो जाता है कि यार मैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप शुरू कर दिया. दे ऑल्सो लिव टुगेदर, लिव इन.
live in relationship as if they were married. So their unconventional union is socially controversial. जब इंसान का दिमाग ब्रॉडन अप हो जाता है ना, जैसे शैली को हमने पढ़ा था, कुछ ज़्यादा ही ब्रॉडन हो गया था दिमाग, इतना कि he did whatever he wanted to do. He had a wife at home, having children with her. He had an affair with somebody else, running away with that person. He didn't mind free thinking. George Eliot broadened her mind, free thinking, intellectual ideas. Fine, it's fine, even to live with a married man, although it was socially very controversial. 1855 में she translates this another work called Essence of Christianity. Essence of Christianity was written by Ludwig Feuerbach. I don't know how to pronounce this. It's just a guess. Feuerbach. Ludwig Feuerbach. Essence of Christianity. 1857, she publishes her first fiction, Scenes of Clerical Life. And this came under the pen name George Eliot. इन्होंने इसी का नाम ले लिया. 1859 से 1876 तक इनके मेजर नॉवेल्स आते हैं. लिटरेरी फेम इनको मिलता है. So she writes her major novels, becoming one of the most acclaimed novelists of the Victorian era. जैसे कि 78 लिख दिया मैंने यहाँ पे. अच्छा, मेजर वर्क्स यहाँ पे हैं. ओके, सो 1878 में क्या होता है? ल्यूइस डाइस, जॉर्ज हेनरी ल्यूइस. एलियट लेटर बाद में मैरीज जॉन क्रॉस, जो एक काफ़ी यंगर आदमी होता है उनसे. 1880 में she also dies on December 22nd, buried next to Lewis in Highgate Cemetery. Not allowed in Westminster Abbey due to an unorthodox lifestyle. इनको अलाउ ही नहीं किया वेस्टमिंस्टर एबे में बेरी होना, क्योंकि अजीब है लोग बहुत. इनका लाइफस्टाइल अजीब था क्योंकि. ठीक है, अब इनके मेजर वर्क्स पे आते हैं. तो सबसे पहले आता है सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ 1857. ये हमने देखा. तो ये क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ 3 नोवेलास. एमोस स्पार्टन नंबर 1, मिस्टर गिलफिल्स लव स्टोरी सेकंड, and third, Janet's repentance. Focus: provincial clergy, quiet heroism, domestic tragedy. It was lauded for its realism. George Eliot का remember, she is a realistic writer. Realism में major works है, particularly towards women. 59 में दूसरा वर्क आया एडम बीड. इट बिकम्स अ ह्यूज सक्सेस. पहली फुल लेंथ नॉवल इनका, अ ट्रायम्फ ऑफ रूरल रियलिज्म सेट इन अ मिडलैंड्स फार्मिंग कम्युनिटी. बस इस एडम बीड के पब्लिश होने के कुछ टाइम के बाद इनकी आइडेंटिटी भी रिवील हो गई थी कि भाई कौन है, पूछने लगे सब लोग. इसमें सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं एडम बीड, डीना मोरिस, हेटी सोरेल. प्लीज रिमेंबर वेरी फेमस कैरेक्टर्स. थीम्स क्या हैं? ड्यूटी, रिलीजन, सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड ट्रेजेडी ऑफ पुअर चॉइसेस. फेमस फॉर इट्स मॉरल सीरियसनेस एंड रूरल डायलेक्ट्स. फिर आता है मिल ऑन द फ्लॉस 1860. दिस वॉज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. इसमें कौन है? टॉम एंड मैगी टलिवर, अनदर वेरी वेरी फेमस कैरेक्टर्स. भाई बहन होते हैं और किस तरह से ये लोग लास्ट में यूनाइट होते हैं. इट्स अ वेरी फेमस सीन. मैगी represents Eliot's own intellectual and emotional struggles.
examines education, gender roles, family conflict, and the constraints of society. It is noted for its powerful flood scene. लास्ट में फ्लड आ जाता है. इट्स अ सिंबल ऑफ फेट एंड रिडेम्पशन. तो मैगी जो है वो पहले बोट लेके टॉम के पास जाती है कि उसको भी लेके चलो. दे बोथ डाई इवेंचुअली. सिलस मार्नर 61. Story of loss, redemption, and the healing power of love. Silas is a reclusive weaver, is betrayed, and is exiled from his religious community. तो एक रिक्लूसिव होता है, उसको अपनी कम्युनिटी से बाहर कर देते हैं. लाइफ जो है ना राइटर की, वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके वर्क्स में उसकी लाइफ को आप देख सकते हो किसी ना किसी कैरेक्टर में. इवन इफ इट इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल और अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, तब भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा मिलेगा कि यार ये तो देखो जॉर्ज एलियट की तरह ही है. तो जॉर्ज एलियट वाज आल्सो लाइक काइंड ऑफ exiled from the community because of her unorthodox relationships. Silas Marner finds redemption through adopting an orphan child. Themes of faith, community, money versus human connection. Concise, very tightly structured, widely read in schools also. Next is Romola. इनका historical novel है ये. Historical novel set in Renaissance Florence. Complex, political, philosophical themes हैं. इंडिविजुअल एथिक्स और हिस्टोरिकल फोर्सेस को एग्जामिन किया है. नेक्स्ट इज फेलिक्स हॉल्ट, द रेडिकल. दिस इज सेट ड्यूरिंग द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832. आई होप यू रिमेंबर द डेट. वहां पे सेट किया है इन्होंने. इट मिक्सेस पॉलिटिकल रिफॉर्म, क्लास टेंशन एंड रोमांटिक एंटेंगलमेंट. लिबरलिज्म, एजुकेशन, मॉरल इंटेग्रिटी, इन सारे आइडियाज को एक्सप्लोर किया है इसमें. मिडिल मार्च, दिस इज अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ. इनका मास्टरपीस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर. ये फिक्शनल टाउन है, ठीक है, मिडिल मार्च, वहां पे सेटिंग है इसकी. फोकसेस ऑन 4 इंटरसेक्टिंग स्टोरीज. मेजर कैरेक्टर्स हैं डोरोथिया ब्रूक, टर्टियस लिटगेट, रोजमंड विंसी, विल लैडिस्लॉ. थीम्स क्या है? आइडियलिज्म, कॉम्प्रोमाइज, मैरिज, सेल्फ फुलफिलमेंट, साइंटिफिक एम्बिशन, पॉलिटिकल रिफॉर्म, जेंडर रोल्स. साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए प्रेज किया गया, बहुत डेप्थ थी इसमें. नैरेटिव आर्किटेक्चर भी अच्छा है. डैनियल डेरोंडा इनकी लास्ट नॉवल, फाइनल नॉवल. फिलोसॉफिकली एम्बिशियस एंड डीपली कॉन्ट्रोवर्शियल. इसमें भी डबल नैरेटिव है. तो एक है, वी हैव ग्वेंडोलिन हार्लेट, अ फ्लॉड हीरोइन, एंड वी हैव डैनियल डेरोंडा who discovers his Jewish heritage. So we have themes of identity, nationhood, morality, and Zionism. Mixed reception मिला इसको. Gwendolyn's story acclaimed. Daniel's जो Zionist है plot considered didactic by many Victorian readers. ठीक है. Now we have themes. Themes आपको लगी गई होंगी पता वर्क्स को देख के कि क्या क्या है. मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी जरूर है कि कोई ना कोई कैरेक्टर ना कोई मॉरल डिलेमा फेस करेगा. फिर साइकोलॉजिकल रियलिज्म है. घुस गई है एलियट दिमाग में इनके इनके कैरेक्टर्स के, इनके इंटरनल थॉट क्या चल रहा है, मोटिवेशंस क्या है. सिंपैथी और एथिक्स भी है. फिर फेमिनिन इंटेलेक्ट और कंस्ट्रेंट, कि कितने लिमिटेड रोल्स हैं विमेन के पास, जैसे मैगी टलीवर, डोरोथिया. इंटेलेक्चुअली कैसे स्ट्रगल करती हैं विमेन. हाउ इज द सोसाइटी चेंजिंग. रिलीजन ऑन डाउट. ऐसा नहीं है कि वो रिलीजियस नहीं थी, अगर उनका ब्रॉडन हो गया माइंड. शी वॉज डीपली स्पिरिचुअल. लेकिन जो ट्रेडिशनल ये बिना मतलब के रिचुअल्स और ये सब थे, इनको इन्होंने रिजेक्ट किया. आजकल भी अगर आप देखो तो कितने सारे हमें रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, विच डोंट इवन मेक सेंस. और आप नोटिस करना, कभी आप क्वेश्चन कर दो उनको गलती से
तो ये हमारे जो बुजुर्ग हैं इनके पास जवाब नहीं होते हैं. दे गेट ऑफेंडेड. हाउ डिड यू क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे कर रहे हो आप? यू कांट क्वेश्चन. It's basically they get angry because they don't have an answer to your question. So she was spiritual, very deeply spiritual, but she rejected the traditional Christianity. तो यही टेंशन इनकी नॉवेल्स में हमें देखने को मिलती है. सो इनका नैरेटिव स्टाइल क्या है? मेनली omniscient नरेटर है, हाईली इंटेलिजेंट, रिफ्लेक्टिव, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स है, डाइडैक्टिक टोन है, स्लो डिटेल्ड प्लॉट्स है. सो शी वॉज हाईली रिस्पेक्टेड, स्पेशली एडम बीड के बाद सक्सेस मिला और मिडिल मार्च को भी. सीन एज इंटेलेक्चुअली सुपीरियर ऑल्सो टू डिकिंस एंड ठाकर. तो डिकिंस को पता लग गया था कि ये जो वर्क है ना किसी वुमन हैंड का है, किसी फीमेल हैंड ने लिखा है, जब जॉर्ज एलियट ने अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी. तो मॉडर्निज्म इनिशियली शी फेल आउट ऑफ फेवर कि ज़्यादा ही मॉरलिस्टिक है, वर्बोस है. इनफैक्ट वर्जीनिया वुल्फ ऑल्सो क्रिटिक्ड हर टोन. But then post-modern and feminist, huge revival हुआ इनका. Feminist और psychoanalytic critics see her as a pioneering voice on gender, subjectivity, and empathy. And today, Middlemarch consistently ranks among the greatest English novels of all time. Globally, she studied. I have written down some famous quotes. It is never too late to be what you might have been. कितना famous है ये हमें पता नहीं होता कि जॉर्ज एलियट का है. Now, this is not necessarily, I mean, sure shot nahi hai. It is attributed to Eliot, although it is debated. Then we have the growing good of the world is partly dependent on unhistoric arts. जितना भी देश में दुनिया में अच्छा हो रहा है, it is partly dependent on unhistoric acts. Historic acts meaning unhistoric acts. Middlemarch. What do we live for if it is not to make life less difficult to each other? Middlemarch. Understood? Yes, correct. जो बोला है वो करो चुपचाप. क्वेश्चन नहीं करते हैं पूजा पाठ के काम में. चलिए. Next is Wilkie Collins. Okay, let me show him to you. This is Wilkie Collins. Somehow Wilkie Collins, I mean, जब आप पढ़ते हो ना without looking at him, you have a different face in mind. This seems like some Russian writer. William Wilkie Collins. चलिए पढ़ते हैं. Wilkie Collins was born in 1824, passed away in 1889. Master of what? Mystery suspense. बस ये याद रख लेना. विल्की कॉलिंस इन्होंने ये लिखा है, मिस्ट्री, सस्पेंस, लीगल ड्रामा. मतलब डिटेक्टिव फिक्शन लिखा है मोस्टली. ही इज नोन फॉर दैट. ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश डिटेक्टिव नॉवल ऑल्सो. January 8th, he was born in. He was the son of a landscape painter, William Collins. 35 से 41 he travels across Europe, family के साथ. These are the experiences that shape his imagination, his descriptions of foreign settings. 41 में he begins working for a tea merchant. उसको पसंद नहीं आता लेकिन he dislikes it. 46 से 50 he studies law, Lincoln's Inn, qualifies as a barrister but never practices.
48. His father dies, and he begins writing his biography also, which sparks his literary career. So he also publishes his first book. Uh, I think it should be 50 May that he publishes his first book, Antonia. Huh. Let me check the. Achha, he might have written it. Let's check the date. Okay, just a minute. Good morning, Muskan. हाँ 1850 ओनली ठीक है ठीक है सो करेक्ट कर लेना या it should be 1850 that he publishes his first novel. Antonia. This one is set in ancient Rome. ठीक है. Also, he meets Charles Dickens and they become close collaborators and friends. Collins contributed to Dickens' magazine, कौन सी Household Words, and later All the Year Round. Please mark. 51 में ये मिले थे चार्ल्स डिकेंस से. 52 से 55 इन्होंने कोलैबोरेट किया डिकेंस के साथ, जो उनके मेंटर भी बने, कोलैबोरेटर भी बने, क्लोज फ्रेंड भी बने. तो 52 से 55 कुछ प्लेज और शॉर्ट स्टोरी में इन दोनों ने कोलैबोरेट किया, जैसे कि द फ्रोजन डीप एक वर्क था, कोलैबोरेशन है डिकेंस और इनकी. 52 में बेजिल आया, 53 में गेब्रियल्स मैरिज, 54 में हाइड एंड सीक, 56 में द डेड सीक्रेट, ये देखो द फ्रोजन डीप विद चार्ल्स डिकेंस. फिर एक और है अ हाउस टू लेट, अगेन विद चार्ल्स डिकेंस एंड मोर, एलिजाबेथ गैस्कल एंड एडिलेड एंड प्रॉक्टर, इन सब ने इकट्ठे लिखा है इसको. फिर चार्ल्स डिकेंस के साथ द हॉन्टेड हाउस एंड अदर्स. अनदर वन नो थरोफेयर विद चार्ल्स डिकेंस. तो ये वर्क्स आ गए इनके चार्ल्स डिकेंस के साथ. Okay. He also gains fame with The Woman in White, and it was a breakthrough sensation novel. 60s में he writes most of his best known works, जैसे कि No Name, Armadale, The Moonstone. Moonstone is very famous. एग्जाम में भी पूछा गया था इसी से क्वेश्चन. Yeah, this is another work, The Dead Secret. विल्की कॉलिंस का है. इसको ये सीरियली पब्लिश हुआ था चार्ल्स डिकेंस के हाउस होल्ड वर्ड्स में. 70s और 80s में इनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है ड्यू टू गाउट एंड ओपियम यूज, लॉर्डनम, बट ही कंटिन्यूज राइटिंग. 89 में ही डाइज September 23rd and he's buried in Kensal Green Cemetery, London. ओके. विल्की कॉलिंस की थोड़ी सी डेट ऊपर नीचे हुई है, इनको आप करेक्ट कर लेना प्लीज अपने नोट्स में. जैसे ये 52 नहीं है, 50 है फर्स्ट नॉवल. एंड द वुमन इन वाइट इज 1860. ये राइटिंग की डेट है 1860 में इट वाज पब्लिश्ड. तो ये आ गए इनके मेजर वर्क्स.
The Woman in White, seminal work of the sensation novel genre. It was serialized in all the year round. मिस्ट्री है, आइडेंटिटी थेफ्ट है इसमें, imprisonment के बारे में बात करते हैं. He introduces unforgettable characters जैसे कि Count Fosco and Marion Halcombe. No Name, इसमें दो बहनों की कहानी है, मैगडलेन एंड नोरा वैनस्टोन. इनको डिसइनहेरिट कर देते हैं इनके पेरेंट्स. Their parents actually die unmarried. They are eventually disinherited. Then we have Armadale. चेक कर लो. 66 या 62 करेक्ट, यहाँ पे ठीक है डेट्स. So it's a tale of two men with the same name. Mysterious woman भी है named Lydia Gwilt. She's one of the most fascinating and morally ambiguous women in Victorian fiction. We have the Moonstone, the most famous one. First full-length English detective novel इसको मानते हैं हम. First full-length English detective novel. This one centers around the theft of a sacred Indian diamond from an English country house. चुराया तो था Indian diamond. But यहाँ पे English country house से भी चोरी हो गया. It introduces Sergeant Cuff, a precursor to Sherlock Holmes. जैसे आगे चल के शर्लॉक होम्स आएंगे वैसे ही यहाँ पे सार्जेंट कफ है. Remember the name. Utilizes multiple narrators, epistolary format, explores British colonialism, race, class, addiction, truth telling. T.S. Eliot called it the first, the longest, and the best modern English detective novels. ठीक है. Next we have Man in White. It criticizes Scottish marriage laws. कि किस तरह से वो लोग women's rights को impact करते हैं. We have poor Miss Finch, blind woman होती है जिसकी आई साइट वापस आ जाती है. The Law and the Lady, a lesser known but important work, features one of literature's first female detectives, Valeria Woodville. अपने हस्बैंड के इन्वॉल्वमेंट इन द मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करती है ये. जैसे वो नहीं है हिंदी फिल्म जिसमें विद्या बालन होती है, कौन सी कहानी, आई थिंक फीमेल डिटेक्टिव, ऑल्दो उसमें कुछ और निकलता है लास्ट में, बट शी इज ऑल्सो इनिशियली इन्वेस्टिगेटिंग हर हस्बैंड्स इन्वॉल्वमेंट इन अ मिस्टीरियस डेथ. द हॉन्टेड होटल ये गॉथिक नोवेला है with elements of ghost stories, psychological horror, and supernatural suspense. And I'll come to the famous quotes. Themes क्या हैं आप लोग देख लेना. The best men are not consistent in good. Why should the worst men be consistent in evil? The Woman in White. My avo footy मतलब कभी ना कभी अच्छा आदमी भी बुरी कहाँ बात कर देता है. Why should worst men be consistent in evil? वो लोग भी कर सकते हैं अच्छी चीज. My hour for tea is 5:30 and my buttered toast waits for nobody. We are all of us more or less ill-made. Moonstone, Moonstone. Adaptations भी हैं जैसे Woman in White, The Moonstone and others have been adapted multiple times for BBC, stage plays, silent and sound films, graphic novels as well. Clear, everyone? कोहिनूर ले गए थे. यस, बहुत फैशन था ओपीएम यूज का. यस, चलो वन मोर राइटर वी विल डू. Lewis Carroll. This is Lewis Carroll. Yeah. Okay.
इनका रियल नेम लुइस कैरल नहीं था, रियल नेम था चार्ल्स लटविज डॉडसन। चलिए पढ़ते हैं। लुइस कैरल, पेन नेम ऑफ चार्ल्स लटविज डॉडसन, was born in 1832. इनका डेट ऑफ बर्थ इजी टू रिमेंबर, 1832, फर्स्ट रिफॉर्म बिल, एंड ऑफ रोमांटिक एज, है ना, तो याद रखना 1832, passed away in 1898, क्रिएटर ऑफ लिटरेरी नॉनसेंस, नॉनसेंस लिटरेचर लिखा है, लॉजिक गेम्स, सरियल ड्रीमस्केप, इन्होंने अपने वर्क्स में वर्ड्स को भी इन्वेंट किया है, ठीक है। 27th January he was born, Cheshire, England. He was the eldest son in a large family of 11 children. He was raised in a devout Anglican household. ये बहुत religious household है। स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी इनको, स्टैमरिंग सबको पता है ना, अटक अटक के बोलते थे। पार्शियल डेफनेस भी थी एक कान में, और बाद में इनको विजुअल इश्यूज भी हो गए। एंड पीपल डोंट गिव अप, यू सी, whatever problems may come. 1846 में he enters rugby school. It was a famous one. Unhappy there. He was very introverted, but he was brilliant at math. अच्छा, लुइस कैरल एक ऐसे इंसान है ना जो um yes, previous year question as well. लुइस कैरल एक ऐसे इंसान है with a brilliant mind. यूजुअली आप लोग देखोगे नहीं ये वाला कॉम्बिनेशन, लिटरेचर एंड मैथ्स नहीं होता कॉम्बिनेशन, पता नहीं क्यों, जो भी है, वॉट एवर रीजन्स, बट लुइस कैरल लिटरेचर प्लस मैथ्स, ही वाज ब्रिलियंट एट मैथ। 1850 में ही बिगिन स्टडिंग इन क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वहां पे मोस्ट ऑफ हिज लाइफ रहते हैं ये। 1851 में हिज मदर डाइज and it affects him greatly. 55 में he graduates with a first class degree in mathematics. He is appointed as a mathematical lecturer also at Christ Church, a position that he holds until 1881. He begins also writing humorous and satirical verse. कुछ पोम्स पब्लिश करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करते हैं मैगजीन्स के लिए, अंडर हिज रियल नेम, एंड द पेन नेम लुइस कैरल इज कॉइन्ड इन 1856. इट्स अ लैटिनाइज्ड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लटविज, इनका रियल नेम था, उसको लैटिनाइज कर दिया इन्होंने। 1856 he takes up photography and he becomes one of the most respected amateur photographers of the era. ठीक है? He also has a friendship with many children. He's known for this. Controversies भी हुई थी बाद में, अब क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे दोस्त थे इनके बच्चे, including this girl called Alice Liddell. She was the daughter of Henry Liddell, who is also the inspiration for इनका जो वर्क है Alice in Wonderland, Alice's Adventures in Wonderland, उसका इंस्पिरेशन है Alice Liddell, the real life character. अच्छा, 1862 में he tells Alice Liddell and her sisters एक बड़ी कहानी सुनाते हैं, फैंटास्टिकल कहानी सुनाते हैं, एक बोट ट्रिप पे गए होते हैं ये लोग, और ये बेसिस बनता है एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का। 65 में ये पब्लिश करते हैं अपना वर्क एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, लुइस कैरल के नेम के अंडर। इट बिकम्स अ चिल्ड्रंस क्लासिक
It has logic, it has nonsense, it has satire, it has fantasy, everything. He also publishes a sequel to it in 1871, Through the Looking Glass, and What Alice Found There. ठीक है, sequel to Alice, based on chess rather than cards. This one follows a young girl who falls down a rabbit एक rabbit hole में गिर जाती है और वो निकलती है एक अलग ही दुनिया में, into a world of nonsensical creatures. Famous characters है Mad Hatter, Cheshire Cat, White Rabbit, Queen of Hearts. We are all mad here. It was Brilling and the Slithy Toves. इस वर्क में इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि ही इंट्रोड्यूसेस ट्वीडलडम, ट्वीडलडी, द रेड क्वीन एंड जैबरवॉक कैरेक्टर्स. इट कंटेन्स जैबरवॉकी, one of the most famous nonsense poems in English. Okay. 76 में he published this, The Hunting of the Snark, absurd allegorical poem about a group of bizarre characters hunting a creature called the snark. Open to various interpretations. Nihilism है, existentialism है, satire of logic itself. इसके बाद ना 1881 में he resigns his mathematics की lecturership also, but he continues living there at Christ Church. 1885 में he publishes a work called A Tangled Tale. 1889 में ये वर्क आता है Sylvie and Bruno. Less successful, more philosophical fantasy, followed by Sylvie and Bruno. इसके बाद ये लिखते हैं सिल्वी एंड ब्रूनो कंक्लूडेड 1893 में, इसीलिए दो डेट्स लिखी हैं. 93 में सिल्वी एंड ब्रूनो कंक्लूडेड. 2-part नॉवल है, मिक्सिंग फेरी टेल एंड फिलोसफी, ड्रीम एंड रियलिटी, सोशल सटायर है, थियोलॉजी है. फिर आगे मेजर थीम्स, ये आपने पढ़ लेने हैं. मेजर थीम्स क्या क्या हैं. स्टाइल देखो इनका, नॉनसेंस लिटरेचर आ गया, प्लेफुल लॉजिक, इन्वेंटेड वर्ड्स हैं जैसे कि चॉटल, गैलमफिंग, which are now in the dictionary, satirical wit, Carroll the logician and mathematician. So he published various works under his real name, जैसे कि symbolic logic, the game of logic, fascinated by mathematical paradoxes, puzzles, and mirror logic. Used his stories to subtly explore logic through fiction, especially in Looking Glass. Carroll the photographer, as I told you, he took artistic photographs of children, including Alice Liddell. His photography is now studied for its Victorian aesthetic and controversial subject choices, sparking modern debates. Why sometimes I've believed as many as 6 impossible things before breakfast. Curiosa and Curiosa. Imagination is the only weapon in the war against reality. फिर अडेप्टेशंस हैं, बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं. डिज्नी की तो है ही है, एलिस इन वंडरलैंड आप देख सकते हो, और भी हैं बहुत सारी. फिर आती है कंट्रोवर्सी, जो ये इनका क्लोज रिलेशनशिप था यंग गर्ल्स के साथ, particularly Alice Liddell, of course have sparked debate. Nobody can keep it clean and tidy and pure. Even if it was, innocent, pure, people have a bad mind. Some view them as innocent and Victorian, other raise concerns by modern standards. क्या बोल सकते हैं. तो he was renowned for his close friendship with young girls anyway, including कि वो उन यंग गर्ल्स को फोटोग्राफ भी करते थे. अब हो सकता है सही में कुछ गड़बड़ भी थी, तो ऐसा कहते हैं sometimes the photographs were in costumes or in the nude, though always with parental permission. ये भी था.
So this aspect of life has led to much speculations. No conclusive evidence has ever been found. 14th January 1898, he dies of pneumonia following influenza just he was short of his 66th birthday. आने ही वाला था जनवरी में. So this is about, yes, Lewis Carroll. Understood, everyone? सैम्यूल बटलर को भी क्विकली पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या खुल गया, क्या खुल गया? ये है सैम्यूल बटलर. Samuel Butler was born in 1835. And he passed away in 1902. अब हम आगे बढ़. रिमेंबर सैम्यूल बटलर का नाम सुनते ही आपको दो वर्क्स याद आने चाहिए, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है? He was a novelist, he was a satirist, big time, translator, independent thinker जिन्होंने religious orthodoxy को, Victorian morality को challenge किया. So he was born into a strict Anglican family. Father was a clergyman, educated at Shrewsbury School, then Cambridge. Classics को study किया इन्होंने. He graduated from Cambridge with a BA. Originally intended to take holy orders जैसे father थे, but he begins questioning. ऐसा बहुत बार होता है ना, when you have a very strict household in terms of religion, the children usually start questioning. He also started questioning Christian doctrines, theological orthodoxy. Then from 1859 to 64, he went to New Zealand. He emigrates to New Zealand. And mainly to avoid or escape family pressure. Religious expectations जो थी इनकी फैमिली की, उसको escape करने के लिए भाग गए. वहाँ पे he works as a sheep farmer in Canterbury, eventually becoming financially successful. Oh, thankfully. Otherwise, all the writers failed, financially failed. Begins writing articles and sketches. Some of them were later included in a first year in Canterbury settlement. Okay. In 64, he returns to England. He settles in London. He begins painting, but then he gradually shifts to literature and criticism. 72 में आया इनका novel. He publishes Airborne, a satirical utopian novel. इसका सबटाइटल भी है और ओवर द रेंज. सटायरिकल नॉवल है, फिक्शनल लैंड में सेटिंग है इसकी, दैट रिवर्सेस और एग्जैजरेट्स विक्टोरियन वैल्यूज. यूटोपियन है ना. फॉर एग्जाम्पल, इलनेस इज क्राइम एंड देयर मशीन्स आर फियर्ड. तो हेल्दी रहो, अपने आप काम करो, मशीन से नहीं. द बुक क्रिटिक्स ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, morality, and progress. And it is often interpreted as an early science fiction also. 73 say 1890 intellectual criticism और काफी सारी controversy भी हुई. He becomes known for his iconoclastic views on religion.
evolution, and Victorian norms. So 1878 में he publishes this work called The Fair Haven. It's a satirical work disguised as a religious treatise defending the resurrection, exposing inconsistencies in religious argument, in Christian arguments. कि आप जो बोल रहे हो ना उसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है, फिट नहीं बैठती चीजें लॉजिकली. फिर 1880 और 90s में ही एंगेजेस इन पब्लिक डिबेट ऑन डार्विनिज्म. अपनी ही थ्योरीज को प्रमोट करते हैं ऑफ एवोल्यूशन, जो एम्फसाइज करती हैं पर्पस एंड विल पे. क्योंकि डार्विन ने कहा था रैंडम है ये, इट्स रैंडम नेचुरल सिलेक्शन. इन्होंने आर्ग्यू किया दैट पर्पस और विल है ओवर रैंडम सिलेक्शन. सो ही वाज स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ चार्ल्स डार्विन. एंड डार्विन के जो फॉलोअर्स थे वो भी हग्सली एंड ऑल. So he advocates neo-Lamarckian, I'll write it down, Lamarckian, neo-Lamarckian evolution. He advocates this. और अपने व्यूज को डिस्कस किया इन्होंने वर्क्स में, जैसे कि लाइफ एंड हैबिट, एवोल्यूशन ओल्ड एंड न्यू, अनकॉन्शियस मेमोरी, लक और कनिंग, इन वर्क्स. गो थ्रू द वर्क्स. अच्छा, ये जो वर्क है इट्स एन एनाग्राम ऑफ नोवेयर एक्चुअली. दूसरा मेजर वर्क आया इनका द वे ऑफ ऑल फ्लैश. It was written earlier, but it was published posthumously in 1903. Semi-autobiographical है, attacking Victorian family life, religious hypocrisy and repression. ठीक है. 1902 में he dies. 1903 में the work gets published. फिर बाकी वर्क्स हैं इनके, ये है लाइफ एंड हैबिट, अनकॉन्शियस मेमोरी एंड लक और कनिंग. एंड देन वी हैव द फेयर हेवन. ये आ गया, अलाइंस विद लमार्कियन आइडियाज, इनहेरिटेंस ऑफ acquired characteristics. Okay, just a minute. 1 minute. Tell him we were not here for a month. Okay, so अच्छा, जब ये वर्क आता है ना इनका, ये वाला द वे ऑफ ऑल फ्लैश, इट शॉक्स एंड ऑल्सो इम्प्रेसेस द रीडर्स, क्योंकि इतनी फ्रैंकनेस थी इस वर्क में, इतना विट था और रियलिज्म भी था बहुत ज्यादा. सो इट शॉक्स एंड इम्प्रेसेस द रीडर्स. ठीक है. Another one is the translation of Homer. We have the Iliad and the Odyssey. Please write down. Butler argued that the Odyssey was written by a young woman based on stylistic evidence. Butler was next level. He would argue anything. So he was challenging Darwin's theories. And now he says, Odyssey to bhai young woman ne likhi hai. His translations are accessible and lucid, reflecting his belief in clarity over poetic grandeur. ठीक है. So we have themes and literary styles. You can go through that. कि क्या इनकी themes थी, हमने डिस्कस कर ही लिया है. एक तो मेजर है ही है कि religious skepticism था. He would go against everything. Key critical insights. He was the pioneer of modern psychological fiction. Precedes Freud. Futuristic thinker on machines. अपने वर्क में उन्होंने लिखा है ना मशीन्स के बारे में, एयर वन में, इमेजिन्स मशीन्स इवॉल्विंग
like a proto AI warning. ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे थे. He knew what he was saying. So at that point of time, in the 19th century, he is giving us a proto AI warning already on machines. He was a reluctant novelist. He was a bold anti clerical voice, although he came from a very strict religious background. He challenged Darwin, and we have some famous quotes. All animals except man, know that the principal business of life is to enjoy it. सिर्फ इंसान को नहीं पता, बाकी सबको पता है, जानवरों को सबको पता है. प्रिंसिपल बिजनेस क्या है लाइफ का? टू एंजॉय इट. A man should be just cultured enough to be able to look with suspicion upon culture at first sight. Nice. Every man's work, whether it be literature or music or pictures or architecture or anything else, is always a portrait of himself. So, how was he received? Often misunderstood, dismissed. Posthumous recognition mila, praised by Virginia Woolf, George Orwell, and T.S. Eliot. He was recognized as a forerunner of existential and psychological fiction. Okay. Yeah. That's it. That's it for today. Go through these writers, go through their works now. Okay. हम लोग कल भी मिलेंगे. कल Saturday है, but we will have a class tomorrow as well. Bye. See you. And keep watching the literary criticism part. I will take a test very soon. Okay. You too. Have a good day. Bye bye.